Students, we are on exercise number D and let's see what is the question is in exercise number D. What do you know about the following abbreviation stand for? Students, इसके लिए एक specific concepts है इंग्लिश में acronyms का. Acronyms क्या होते हैं? Acronyms short forms होती हैं किसी बड़े words की जिनको हम abbreviations भी कहते हैं. अब एब्रीविएशंस इट मीन्स उन एक्रोनिम्स का या उन शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म को हम एब्रीविएशन कहते हैं. हमें यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, कुछ एक्रोनिम्स दिए गए हैं और हमने उनकी एब्रीविएशंस बताने, उनकी फुल फॉर्म्स बतानी है, यानी कि एक्चुअल वर्ड्स बताने. चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्रोनिम्स हैं या हमें कौन कौन से एक्रोनिम्स दिए गए हैं. The first is USA, UK, UAE, ICU, MBBS, PhD, MPhil, PAF, NADRA, UN, ISSB, WAPTA, PTB, MNA, MPA, IMF, WHO, WTO, UNESCO and UNICEF. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 के करीब एक्रोनिम हैं और हमने इनकी एब्रीविएशंस को लिखना है. चलिए हम वन बाय वन सबकी एब्रीविएशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यूएसए, तो इट मीन्स दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. देन यूके, दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम. देन यूएई, विच मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. देन आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट. देन इज पीएचडी. पीएचडी मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. देन एमफिल, द मास्टर ऑफ फिलोसफी. देन पीएएफ, पाकिस्तान एयर फोर्स. Then we have NADRA, National Advanced Database Registration Authority. Then we have UN, that means United Nations. Then we have ISSB, Inter-Services Selection Board. Then we have WAPTA, Water and Power Development Authority. Then we have PTB, Project Team Builder. Then we have MNA, Member of National Assembly. Then we have MPA, Member of Provincial Assembly. Then we have IMF, International Monetary Fund. Then we have WHO, World Health Organization. Then we have WTO, World Tourism Organization. Then we have UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Then we have UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. सो स्टूडेंट्स, ये थे इन एक्रोनिम्स के एब्रीविएशंस. आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.